Assalamu alaikum, this is Naeem Khiyani from The Art of Investing. Thank you so very much for liking and providing all the feedback to our episodes. बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें और इस वजह से हम इसको बेहतर से बेहतर इंशाल्लाह बनाने की कोशिश कर रहे हैं and you will see a lot of difference in coming programs as well. लास्ट वीक हमने डिस्कस बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट की थी. हमने पाकिस्तान के हवाले से भी डिस्कस किया था जिसको काफ़ी पसंद किया गया और हम ट्राई ये कर रहे हैं कि अब आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे एक पूरा प्रोग्राम अलोंग विद जो हमारी डिस्कशन होती है पाकिस्तान में और जो हमारी डिस्कशन होती है इमरान भाई के साथ, यू विल गेट टू हैव दोज वीडियोज़ एज वेल. तो अगर आपको सिर्फ वही डिस्कशन देखनी है तो यू कैन रिव्यू दैट एज वेल. सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. हमारे पास कुछ और मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की जो है वो रिक्वेस्ट आई है. वो इंशाल्लाह हम अपकमिंग प्रोग्राम्स में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे सच एज ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स. सो वो बहुत रिक्वेस्ट आई है उसकी क्योंकि हम अभी तक हमने ऑप्शंस पे ज़्यादा बात नहीं की है इस प्रोग्राम में. सो दैट्स इंशाल्लाह व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन कमिंग वीक्स और कमिंग मंथ्स. बट मीनवाइल this is the format what we will be taking it on. So thank you so very much for liking it. So let's start our presentation. Art of Investing with Naeem Khiyani. आज इस week S&P and TSX Composite down by 200 points. टैरिफ अभी भी एक जो है वो मेजर इस वक्त ये समझें वेरिएबल है इन सारी कंपनीज में जो इस वक्त जो है वो ट्राई कर रही हैं टू गेट आउट ऑफ इट, बट दैट्स स्टिल a hurdle right now for majority of these companies. हमने लास्ट वीक फोर्ड का डिस्कस किया था और हमने ये भी कहा था कि फोर्ड जो है वो इस वक्त अपने रेवेन्यू मॉडल के ऊपर जो है वो उनको काफ़ी हिट मिल रही है अगेन जस्ट बिकॉज ऑफ टैरिफ. एंड ड्यू टू टैरिफ यू कैन सी S&P कंपोजिट जो इंडेक्स है वो नीचे गया है एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ. इट्स फेल एट अराउंड 216 पॉइंट्स एट 25,839 एंड दिस इज द लार्जेस्ट साइड सिंस अप्रैल 10th. तो अब जो है वो क्योंकि टैरिफ उस वक्त अनाउंस हो गया था, हमने देखा था कि इट वेंट डाउन, बट नाउ उसके जो रेसिप्रोकल इफेक्ट है दैट्स व्हाट वी आर सीइंग. ऑन द अदर साइड न्यूयॉर्क डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ड्रॉप्ड एट अराउंड 816 पॉइंट्स to 41,860 and S&P index decreased 95 points. This is due to जो major tech companies हैं उनको काफ़ी हिट मिली है. इस वक्त आप लोगों ने एक न्यूज़ पढ़ी होगी जिसमें ट्रंप ने एप्पल को बोला है कि आप अपने आईफोन जो है वो इंडिया से ना बनाएं, यू जस्ट ब्रिंग इट होम, वहाँ यूएस में ही जो है मैन्युफैक्चर करें, बट डेफिनेटली देयर इज अ कॉस्ट एसोसिएटेड टू दैट एंड ड्यू टू विच इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है वो वहाँ लूज होता है एंड दैट्स व्हाट यू आर सीइंग अ ड्रॉप हियर एज वेल. इन फैक्ट S&P 500 इंडेक्स decreased by 95 points and that's due to all of those reasons which has been happening right now. As I mentioned कि tariff एक जो है वो add-on cost है for majority of these companies. They are trying to get away with this. They are trying to come up with an alternative options, but still उनके जो products हैं वो market में हैं, जो product की demand है वो market में है. अब फौरन से आप जो है वो प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज नहीं कर सकते हैं and they are hitting or eating some of the cost there as well, and which is why you are seeing some points which are getting decreased along with these companies revenues are going to be impacted in coming up quarters. Okay जी, next हमारे पास है बेल कैनेडा. इस वीक अराउंड 4 घंटे तक इंटरनेट डाउन रहा बेल कैनेडा का due to there are a lot of reasons but there is no set reason being reported. जब इस तरह की टेक कंपनीज और इस तरह की जायंट टेक कंपनीज अपनी सर्विसेज जो है वो जो मिलियंस ऑफ लोग इस सर्विसेज यूज कर रहे होते हैं, व्हेन यू गेट डाउन ड्यू टू फॉर एनी स्पेसिफिक रीजन देन डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यूज लॉस व्हिच यू आर गोइंग टू बी इम्पैक्टेड. और उसका हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे इनका स्टॉक मार्केट इस वक्त कि स्टॉक प्राइस क्या चल रहा है. सो बेल कैनेडा 130,000 customers reported on May 20th that they cannot connect to Bell Canada and due to which आपने देखा कि उनका जो आउटेज है वो काफ़ी देर तक रहा और जिसकी वजह से they lost some of their customers as well. क्योंकि जब आपकी मेजर चंक और वो it happened at around 9:45 AM which was the peak weekday
और जब आपका पीक के ऊपर आप अपना काम चल रहा होता है और देन यू डोंट हैव एन इंटरनेट, दैट डेफिनेटली कस्टमर्स would like to switch somewhere else, and that's what exactly was happening. Majority of the customers or some of the customers started looking out different options. Rogers was one of the options which you may impact के Rogers जो है वो वहाँ पे मज़ीद customers उनको शायद चले जाएंगे due to this outage. Rogers का भी जो है share price जो है वो increase हो रहा है, not because of this but because of other reasons जो हमने last time discuss किया था कि Rogers जो है उन्होंने काफ़ी collaboration की है different companies के साथ, NFL and different companies के साथ, and they are getting towards that level. So let's check. Bell कंपनी की इस वक्त प्राइस है $29.75. ये वैसे मैंने 3 महीने का चार्ट निकाला है. अगर आप इसको 5 दिन का करें तो यू कैन सी अ लॉट ऑफ हाइक अप एंड डाउन, एंड दैट्स वेयर Bell price was at $30, but it starts coming down due to that outage, and it came down at around 29.55, and now it's getting better and going up. Bell is in TS Toronto Stock Exchange. EPS Bell का है 0.42. Bell is a very huge company. They don't only sell internet, but there are other products which they work on, and they do sell those as well. इनका जो dividend है that is 5.87%, which is way too high in this sector, which is 1.75 around it. और इस वक्त एनालिस्ट की प्रेडिक्शन है कि इस प्राइस को होल्ड किया जाए अगर आपके पास स्टॉक है तो, लेकिन अगर आप स्टॉक इसमें जो है वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, सो यू जस्ट नीड टू चेक कि इस वक्त 2 दिन के बाद बेल की प्राइस क्या होती है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन जंप इन. डेट टू इक्विटी रेशियो इज लोअर वर्सेस पीयर विच इज गुड, और पीएस मल्टीपल बिलो एवरेज. बाकी बेल की जो इस वक्त फाइनेंशियल कंडीशन है वो इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है. दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू गेट मोर कस्टमर्स, एंड दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू अपग्रेड देयर नेटवर्क एज वेल, due to which जो उनके customers हैं they are moving from one side to another. So that's what you are seeing here. Financial condition इतनी ज़्यादा strong नहीं है बल्कि it may come up with a lot of different projects which they are working on, but we'll see how it goes. So as I said, if you would like to jump into Bell, just watch for the price. If it goes down a bit, then you will be able to jump it. But if it stays there, I would say just put it on hold. But we'll see inshallah in our technical analysis to see कि ये कहाँ तक prices की जा रही है. Coming back to our presentation, next हमारे पास जो हम discuss करेंगे वो है Bell को हमने discuss किया अभी, और next हमारे पास है इस वक्त Shopify. Shopify, if you don't know, it's a e-commerce website या e-commerce, आप इसको समझ लें engine where you can sell your products. That's the simple definition of Shopify. They are introducing some AI tools. Shopify आज से कोई 8 साल पहले it was a huge market, क्योंकि उस वक्त e-commerce और जो online shopping and all that was there, but Shopify technically changed the whole dynamics of it. So 10 साल पहले या 8 साल पहले Shopify was doing much better, and their stock price rose like crazy. But then definitely there are a lot of competitors came into the market, and that's where they gave a lot of good competition to Shopify, or due to which Shopify came down a bit. Shopify, as I mentioned, they are introducing AI tools, और जिससे उनकी जो मार्केट और जो उनकी सेटअप कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, और जो कस्टमर्स हैं उनको काफ़ी यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलेगा. ऑन द अदर साइड, the payment updates remove the burden of the duplicates admin system as well, क्योंकि उनके कुछ सिस्टम में कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही थी कि आप डुप्लीकेट हो रहा था उनके पेमेंट सिस्टम, एंड नाउ दे आर सेटिंग दिस अप एज वेल. अलॉन्ग विद नाउ दे आर एक्सेप्टिंग मोर देन 130 करेंसीज विच सेटल इनटू अप टू 8. सो 8 पहले करेंसीज थी, अब वो जो है वो 130 करेंसीज हेल्प आउट कर रहे हैं विद इन 8 मर्चेंट. सो ये दे आर लॉट ऑफ चेंजेस व्हाट दे आर ब्रिंगिंग इन, right, and which is why they are getting better and they are getting back. अच्छा, Shopify का स्टॉक प्राइस हम चेक करें इस वक्त, तो इस वक्त इनके स्टॉक प्राइस की वैल्यू है $143.19. पी रेशियो इस वक्त 81 है. Shopify एज आई सेड अर्लियर के बहुत हाई है उसकी प्राइस. अगर हम इसका मैक्स देखें या 5 साल पहले देखें तो Shopify की प्राइस वाज अराउंड $209,
and if it goes, we go max, it technically touched $209 right there. So now it is at 143, my bad, और ये थोड़ा सा और नीचे जाएगा जैसे जैसे जो है मार्केट आगे बढ़ेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत है मार्केट में. बहुत सारे AI टूल्स इस वक्त मार्केट में आ चुके हैं फ्रॉम पेमेंट्स परस्पेक्टिव, फ्रॉम पेमेंट गेटवे परस्पेक्टिव एज वेल. जो हमारे IT के दोस्त हैं उनको अंदाजा हो गया होगा कि देयर आर लॉट ऑफ कंपटीशन विद इन दैट एज वेल. और जब एज अ कस्टमर या एज अ इन्वेस्टर अगर मैं देखूं तो मैं ये देखता हूं कि किसका कस्टमर बेस ज़्यादा है फ्रॉम टूल्स परस्पेक्टिव, एंड दैट्स वेयर आई माइट गो विद अलॉन्ग विद देयर रेटिंग्स एंड ऑल. देयर आर लॉट ऑफ वेरिएबल्स व्हिच गेट्स इन्वॉल्व इन देयर. अच्छा जी, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त स्टैट्स कनाडा की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि ग्रोसरी प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड एट अराउंड 3.7% ईयर ओवर ईयर, सॉरी मंथ ओवर मंथ. और इसका अगर आप एग्जैक्ट कॉज देखें तो 3.7% प्राइस रोज ऑन वेजिटेबल, फ्रेश और फ्रोजन बीफ एट 16.2%, विच मीन्स के 16% उसकी प्राइस रेज हुई है, along with coffee and tea at around 13.4%. So even though हम ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन का जो रेट है वो डाउन हो रहा है, बट ऑन द अदर साइड व्हेन वी आर सीइंग दीज टाइप ऑफ रिपोर्ट्स वेयर ग्रोसरी is getting out of hands, along with it's increasing month by month, that's where the inflation gets into trouble. हमने लास्ट वीक एक और चीज डिस्कस की थी लॉब लॉस की, वही हम वापस डिस्कस करेंगे ताकि आपको रिफ्रेश हो जाए. लॉब लॉस इज स्टिल सेइंग कि उनकी जो पुरानी इन्वेंटरी है बिफोर टैरिफ दैट इज गेटिंग ऑब्सोलीट, बट नाउ जो न्यू इन्वेंटरी आने वाली है विद टैरिफ इट्स गोइंग टू इंक्रीज एज वेल, अलॉन्ग विद जो डिमांड आ रही है लोकल कंज्यूमर से. वो डिमांड ये है कि आप अपनी प्राइसेस कम करें ताकि हम जो है वो अपनी ग्रोसरी के बिल जो है वो प्रॉपरली पे कर सकें. बट दीज रिटेलर्स आर कैन नॉट बी एबल टू डू सो ड्यू टू टैरिफ, ड्यू टू ऑपरेटिंग कॉस्ट, ड्यू टू लॉजिस्टिक्स एज वेल. So that's what we are seeing. It's getting increased month by month. और आप अपने ग्रोसरी बिल में भी देख सकते हैं कि it's getting increased and it's getting on the other side. और वो थोड़ा सा इन्फ्लेशन के ऊपर भारी पड़ सकता है, और जिसकी वजह से हो सकता है कि जो इंटरेस्ट रेट जो अभी अगले महीने आने वाला है वो स्टडी रहे, क्योंकि ये जो रिपोर्ट्स है दे आर नॉट दैट गुड टू सपोर्ट द कैनेडियन इकोनॉमी. अच्छा, लास्ट वीक हमने ये डिस्कस किया था. आई जस्ट वांट टू डिस्कस इट अगेन जस्ट वन मोर टाइम सो दैट यू कैन रिफ्रेश योर मेमोरी. 1000 आइटम are affected by tariff. That's what Loblaw is saying. But that total will rise to more than 3,000 within next week or two, and could peak over 6,000 within the next 2 months. So अभी तो 1,000 आइटम या 1,000 प्रोडक्ट्स जो हैं वो इम्पैक्ट हो रही हैं, लेकिन कमिंग वीक और कमिंग वीक्स में 3 से 6,000 की प्रोडक्ट्स जो है इम्पैक्ट होंगी. इन मिड अप्रैल गवर्नमेंट ने एक अनाउंस किया था कि सिविल एडजस्टमेंट अराउंड 60 बिलियन टू काउंटर टैरिफ, ताकि वो जो है वो थोड़ा सा रिलीफ दे सके. बट दैट स्टिल जो है वो नॉट द केस, और दैट स्टिल नीड्स टू बी डन, ताकि जो है वो लोग अपनी ग्रोसरी की प्राइस प्रॉपर तरीके से कर सकें. अच्छा जी, जो एक्टिव स्टॉक रहे या एक्टिव कंपनीज रहीं इस वीक, दोज वर मैन्युलाइफ, इट्स $42.94. टीडी बैंक को हमने काफ़ी डिस्कस किया था और हमने कहा था कि 4 महीने या 6 महीने लगेंगे टीडी बैंक को टू गेट बैक टू नॉर्मल, क्योंकि टीडी बैंक उस वक्त $73 पे था आज से 4 महीने पहले. And now TD is at $92.81. Enbridge is at $62.66. Suncor, हमने Suncor के बारे में बात की थी, is at $49.05, and Air Canada is at $18.62. US की मार्केट इस वक्त हम चेक करते हैं. Tesla is at 341, 1.92% उसका जो रेट अब हुआ है. Nvidia is at $132. एंड AMD इज एट 110. अच्छा, ये हमारे वो कंपनीज हैं जो एक्टिव हैं कैनेडियन और US मार्केट में. अब हम चलते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को रिव्यू करने के लिए. आज हम डिस्कस करेंगे PSO, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, और क्योंकि लास्ट वीक तक हमने सेक्टर्स वाइज डिस्कस किए थे, बट टुडे इंशाल्लाह विद असद भाई विल डिस्कस के पाकिस्तान स्टॉक पाकिस्तान स्टेट ऑयल जो है वो कैसी कंपनी है,
अगर कोई इन्वेस्ट उसमें करना चाहे तो क्या प्राइस उसको देखनी चाहिए, राइट? एंड ऑन द अदर साइड जो इस वक्त इन्वेस्टर्स का जो पूल है पीएसओ को लेके वो क्या सोचता है. सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस विद असद भाई इन द नेक्स्ट सेक्शन. ऑलराइट, सो मेरे साथ इस वक्त हैं असद करीम साहब. असद भाई इज बीन विद अस फॉर सच अ लॉन्ग टाइम एंड वी हैव बीन डिस्कसिंग Pakistan stock market and different sectors. Assalamu alaikum Asad bhai, how are you? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड. आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा असद भाई, आज हम डिस्कस करेंगे इन कंपनीज, राइट? एंड दैट्स व्हाट वी सेड लास्ट वीक, that inshallah from this week onwards we'll be discussing specific companies and their performance in the stock market and how investor is been looking into these companies if they would like to invest it in. तो आज हमारी कंपनी है पाकिस्तान स्टेट ऑयल. मैं कोशिश करूंगा एक थोड़ा सा उसका ब्लड भी चलाऊं जब आप बात कर रहे हो. तो पाकिस्तान स्टेट ऑयल, how do you see this as a company? I believe it formed around in 1970s or late 90s, late 80s. How do you see that company as a company there? This company is very good as far as Pakistan's oil and gas sector is concerned, but the main point is it is a very good company as far as shares trading is concerned. The PSO share last trading close was just around 380 rupees a share, and it was tipped a bit. Investors sold out their holdings in PSO. Most of the retailers try to do daily intraday trading, and they try to get profit during the day trading. So PSO is a very big company, and it has normally traded trading volume around over 2 million shares in single day. Last trading day, PSO shares trading volume was around 2.7 million shares. It's a very big company. Let me tell you, two things are very interesting as far as PSO shares are concerned in Pakistan. It's undervalued. Its price earning ratio is 38 rupees a share, but it's undervalued. And if one can go for the long-term buying and hold PSO shares, it can goes up around 700 rupees a share. But you have to hold it. This is what the PSO is. And another thing which is very interesting, PSO holds and enjoys around more than 50% of entire market share in Pakistan. This is a very big thing. PSO has monopoly in jet fuel sales. It has no competitors as far as jet fuel sales is concerned. And PSO hold two things which are very sacred in the company's investment policy. One thing, it can sustain, it can bear, it can hold deferred payments from bulk buyers. So if any bulk buyers, they directly purchase products from PSO and they pay after 6 months, even sometimes a year later. And the PSO can hold and sustain this gap of liquidity. So this thing makes PSO unique in Pakistan business. Very good. So PSO is like they can hold the transactions until further whatever the period is, और वो customers जो हैं जो उनके पास आ रहे हैं, right? So they can easily kind of provide all the benefit and facility to the customer so that they can hold the all. That's commendable. तो PSO के अलावा जो पाकिस्तान में जो competitor हैं जो इस field में such as Shell है, Coltex है, right? So are they not giving hard time to PSO? क्योंकि ये जो companies हैं ये foreign based हैं, so are they not giving hard time to PSO in the local sector where technically they are in the retail market of selling gas? इसमें जो इनके the competitors of the PSO have little margin as far as the market sales or market strategy is concerned. All government entities, corporations, state-owned enterprises like PIA, like steel mill, like banks, like other oil companies, they all go for PSO because of this deferred payment facility or advantage PSO has over other companies. Total, Parco, Shell, Coltex, they can sell things for a deferred payment of 2 months, not 3 months. How can they sustain? Yeah. They will fall under liquidity crunch. This is the main advantage of PSO has. All government agencies,
government institutions, government corporations, and other agencies and other areas. They are all wholesale buyers of PSU. Very good. This Very is good. No, what. that's a very good point. So, as an investor, if someone would like to jump in, you said it's undervalued already. So, is this the right price to jump in, or they should wait to go further down and then they jump in there? What would you suggest? In 2 years, the stock market has crossed a 120K benchmark. This threshold is very high, and the stock market outperformed Pakistani stock market, outperformed entire other stock markets, regional as well as global. This makes stock market a very good place for long-term investment. Medium to long-term investment is a good strategy, whatever share you buy. As far as PSO is concerned, I can bet you within the next 6 to 8 months, it will go over 600 rupees a share. Because of this, the PSO share is still undervalued. If we see the chart, 50 weeks high was 465 rupees a share, and what I believe 165 a share was 52 weeks low. So this is the game in PSO shares. Retailers are mostly most of the retailers trade PSO shares on daily basis. They go for intraday selling, they go for intraday buying, and they try to make profits. That's why PSO has very huge volume in the stock market trading. No, that's very If we good to know, say because stock market, exactly, because I was just let seeing me the tell you chart. another thing. If one day if we see stock market total overall volume is, we can say, just 30 million shares. So what do you think? What will be the contribution of PSU shares? It will around 10 million shares. So, majority of the It, chunk it, would go there. it Correct. will go for PSO. Very good, very good. I was just looking at the chart. I believe in last September 30th, 2024, PSO price was 161. So it's not even a whole year, right? And now the price is 376. So I believe your analysis is bang on. I mean, next 6 or 8 months, we would see it go up to 600. So all the investors who would like to invest in PSO, do your due diligence as well. But Asad Bhai is analyzing in such a way that you can jump in right now as an undervalued, and you'll get a lot of good profit out in next 6 or 8 months. Another thing is very important. As far as people in Canada, Australia, and overseas Pakistanis, I can suggest them to go for portfolio investment in PSO shares. If they can buy PSO shares in pockets, they can hold. It will benefit them. Very good. Well, If they go that's for good to know. a retail business, if they go for retail trading, it will be of no use. They will lose. Okay, no, that's perfect. Thank you so very much, Asad Bhai, for being part of the show. Inshallah, next week we'll pick up another company and we'll discuss the other company as well. Thank you so very much. Most welcome, sir. All right. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you. All right. So अब हमारे साथ हैं इमरान बेग साहब. इमरान भाई is a very good technical analyst और I'm personally learning a lot from him. अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, क्या हाल है सर? वालेकुम सलाम नईम भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर. अच्छा सर जी, आज है बेल. बेल का आपको पता होगा 2 दिन पहले नेटवर्क जो है डाउन हुआ था पूरे ऑन्टेरियो और क्वेबेक में, राइट? तो जब इस तरह की चीज़ होती है तो एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वैसे ही जो है वो शेकअप होना शुरू हो जाता है, और ऑन द अदर साइड कस्टमर कॉन्फिडेंस अलग है, शेकअप होना शुरू होता है, यार अब हम बेल नहीं चाहिए, अब हम कुछ और चाहिए, राइट? तो वो जब दिमाग में आता है तो वो फिर उससे कहानी डिफरेंट हो जाती है. तो हमारे हिसाब से ये जाएगा नीचे. इनफैक्ट एनालिस्ट कह रहे हैं कि $33 तक जाएगा, बट हमारे हिसाब से ये 27 या 26 तक इसको जाना चाहिए अभी और नीचे. अब आपकी एनालिसिस क्या कहती है सर, वो देखते. ठीक सर, तो मुझे जरा सा स्क्रीन शेयर करने दीजिए. स्क्रीन जो शेयर हो रही है उसके हिसाब से अगर बेल ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है मेरी, और ये मेरा बॉक्स जो मैंने बनाया है, मैजिक बॉक्स जिसको मैं कहता हूँ, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो 2217 पे जा रहा है सर बेल. अब तो 27 की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ 2717 की, 2217 की. अच्छा, $22 पे जाएगा. ओके, सो $22.25 तक ये चला जाएगा, एंड डेफिनेटली चला जाएगा, क्योंकि इसकी जो रिट्रेसमेंट थी अपनी इसने रिट्रेसमेंट कर ली है, 3828 कर चुका है, 1618 पे जाएगा. सो 2225 इसका डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन. क्या बात, क्या बात. और फिर इसके बाद सर ये ऊपर आने के कुछ चांसेस है इसके कि बिल्कुल ही ये जो है वो उसी पे रहेगा थोड़ा सा तक?
अगर ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट दे देता है यहाँ से इस जगह से, मींस के अगर ये 31 को ब्रेकआउट दे रहा है, कुड बी गो टू 34, 98, 88 तक चला जाए, ठीक है, लेकिन चांसेस आसार कम है, इट्स गोना गो फर्दर डाउन. ओके ओके, नो दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड. एटलीस्ट 25 75 तो है ही है, which is 90%, and furthermore gonna be like 22 25 का एरिया. चलो, गुड टू नो. तो अब देखते हैं सर, इसकी अगले हफ्ते में रिपोर्ट आ जाएगी पूरी, राइट, इन कपल ऑफ वीक्स. और जैसे कि हम लास्ट टाइम हमने फोर्ड का डिस्कस किया था, वो भी उसने भी टारगेट जो हिट किया आपका, राइट, जो आपने बताया था, राइट. और सिमिलरली वॉलमार्ट, आई बिलीव वॉलमार्ट डिड हिट द सेम टारगेट एज वेल. सो आई बिलीव वी आर बैंग ऑन इंशाल्लाह. अब अगले हफ्ते इसको भी जरा एक दफ़ा रिव्यू करके देख लेंगे कि ये कहाँ पे है इस वक्त, तो हमारे व्यूअर्स को ज़्यादा आइडिया भी हो जाएगा उस पर. Definitely. Alright sir, thank you so very much इमरान भाई, really pleasure having you here इंशाल्लाह. Thanks for giving me opportunity and अरे see you later. क्या बात कर रहे हैं. Thank you so much sir. अस्सलाम वालेकुम. Bye now. So this was it folks. आज हमने कवर किया बेल फंक्शनल और सॉरी फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस दोनों तरफ, और दोनों तरफ हमने यही इसका रिजल्ट निकाला कि इट्स गोना गो डाउन. इमरान भाई कह रहे हैं कि 22 तक जाएगा. हमारी फंडामेंटल एनालिसिस ये कह रही थी कि 26-27 तक जाएगा एंड देन इट्स गोना कम अप, बट we'll definitely go with the technical analysis because that's where the actual work comes in. On the other side, we did discuss overall about groceries कि वो बढ़ रही हैं इस वक्त कनाडा में, और असद भाई के साथ हमने डिस्कस किया पाकिस्तान स्टेट ऑयल की कंपनी का शेयर, जो कि उन्होंने कहा कि इट्स अंडर वैल्यूड and if you would like to invest in, do your due diligence before you jump in, but it's undervalued right now, and according to him it's gonna go up to 600 Pakistani rupee in coming 8 or 9 months or so. So thank you so very much for watching The Art of Investing with Naeem Khiyani. Inshallah next week we'll see you with different topics and with different companies. Assalamu alaikum. रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं. आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं. एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ. मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स. कॉल नाउ एट 416-855-9464. ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस कनाडा. Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600, or register at arshadbhatti.com. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007.
Team Farhan, mortgage solutions designed for you. 15-year experience of mortgage services. Customized mortgage solutions as per your need. Commercial, residential, construction and agricultural mortgage. Our lowest mortgage rate. Team Farhan को एक दफा खिदमत का जरूर मौका दीजिएगा. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. 416-569-9294. TeamFarhan.com. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. राहत बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर, खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही ऑथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में, कुछ मीठा कुछ नमकीन। राहत बेकर्स, आज ही विजिट कीजिए 3920 Eglinton Avenue West, Unit 24, Mississauga. Call 905-820-1500 or visit rahatbakers.ca. Did you know that staging your home can result in more than 7% return over the list price? Welcome to Sperona's Home Staging and Interior Design, where we transform your houses into dream homes. Our experts meticulously select each element to bring spaces to life, helping buyers envision their future and creating that emotional connection. We have our own transportation and logistical arrangements. No waiting on outside vendors. We ensure a quick turnaround to complete any project efficiently. Let us bring your space to life and help you achieve top dollars for your home, because it's not just about selling a property, it's about creating a future. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. पूरा मन का सपना मेरा भी अब घर है अपना, घर आपको अच्छा घर चाहिए। Then let Talha Bhatti serve you the best. 647-295-7861. Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talha Bhatti. 647-295-7861. Then let Talha Bhatti serve you the best. At Alam Law Firm, we believe that the most important element of every file we work on is indeed the clients themselves, which has resulted in a proven track record of success. Our battle-tested litigation lawyers stand tall in the face of adversity and challenging cases. Our legal team comprises many legal professionals. Every individual deserves dedicated legal representation. For legal representation that will aggressively fight for your rights, contact Alam Law Firm today. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है, तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Attention business owners and corporate professionals. Tired of taxes chipping away at your company's profit? Take control of your financial future
with our revolutionary corporate insurance strategy that works like tax-free saving account with no limits. Say goodbye to over 50% tax on passive income and a hefty 66.7% capital gain inclusion rates. Don't let the taxman hold you back. Unlock the full potential of your corporate investments with the full liquidity today. Hello, this is Zahid Sayyeda Farouj Financial Group. To learn more, call us at 905-624-0008. राह बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसी लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर, खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही ऑथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में, कुछ मीठा कुछ नमकीन। राहत बेकर्स, आज ही विजिट कीजिए 3920 Eglinton Avenue West, Unit 24, Mississauga. Call 905-820-1500 or visit rahatbakers.ca. You know, we were always trying how to get a house. You remember the Royal Financial Group flyer you gave me for the mortgage? Oh yes, Shiraz Hussain, who did our mortgage too. Yes, I actually went to their office. The staff was so professional. They're expert in their services. And you know what Shiraz said? We have more than 100 lenders to help you to find our right qualified lenders and program for your purchase, refinancing, any of your commercial needs. At the Royal Financial Group, we deliver what we promise. Royal Financial Group. Never put a limit on your dreams. A criminal charge can be an ugly and nasty surprise. Don't let bad decisions or unfortunate circumstances take control of your life. The criminal lawyers at Alam Law Chambers will listen to your story and develop the best defense for you. Nothing in life is more important than your freedom. Reliable and affordable. Alam Law. If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles.